So hello guys, welcome to my channel Study Hub. कैसे हो बच्चों? ठीक है? Yesterday पढ़ाई किया कि नहीं किया? So I will start the chemical bonding part 2 today for diploma engineering students. अच्छा, हमको सिखा रिया है. I have told you again and again, this is not the 11-12 course, so it is a light way I have to proceed and I have to complete in 3 shots. So those who are not follow the first video must follow the first video. If you do not follow, যদি না follow করো, then this will not be cleared. Okay, so must follow the first part of this chemical bonding, then you will proceed second, and I will complete this bonding most probably 3 blocks. Okay, so be happy, don't be worried. All of this will be cleared in a lucid manner. After I am sure, after viewing this video, the chemical bonding, about the chemical bonding, all will be clear to you. Whatever in your course, only, not total bonding will be clear. The course related questions and answers will be clear if you follow it and carefully. So let's start the second part. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. तो start करो. तो today I will start about yesterday. Have you learned? Have you seen the video? There is so many things, so many funny things are there. Is it really required or not? Yes, required. Okay, I'll try to finish it in this way. So the chemical bonding, what yesterday I have given you the details about the 3 types of bond: electrovalent bond, covalent bonds and coordinate bonds. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बनता है क्या हो, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोवेलेंट में ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है. तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनता जो है वो और एक प्रोसेस है, वो जो है वीवीटी. वीवीटी जो प्रोसेस है, ये क्या है? एक्चुअली chemical bonding take place in class of 11 or 12. Actually, this total bonding based upon 4 theories. Cosel's-Lewis theory. This is not your course. Cosel's-Lewis approach. Octet doublet formations. So variation of doublets. What you learned about the inert gas. That is the ideal gas. They do not take part in the chemical reactions, but it is not correct. They have always have a tendency to occupy the octet, but this is not valid if you study further. But I will not discuss in this your syllabus. So that's Cosel's approach, Vesper theory, VSEPR theory, VVT theory, Brandesburg theory, MOT theory, MOT, molecular orbital theory. So many theories are there regarding the chemical bondings, but all are not in your syllabus. So I will not discuss about that. Just what is the main thing, just I am superficially discussing. Now VVT is very important. The VVT का जो मुद्दा जो मेस्ट जिस्ट है, what is VVT? VVT क्या है? VVT जो है, थोड़ा हम short, थोड़ा very in brief I am discussing. This theory is based on the quantum theory, where electron moving in orbital between what? Just and behaves like particle and wave nature. Electron can be found in atomic orbital. That is, you can learn further wave function. And it is mainly based on the atomic orbital, hybridizations, overlapping of atomic orbitals, and so on. So actually, how does atomic orbital overlaps? According to this theory,
two atoms comes near each other. Two atoms come near each other. The valence atomic orbitals overlap each other, and unpaired orbitals, that is unpaired atomic electron, becomes paired up. Thus, bond form and covalent bond forms. Actually, the concept is, according to this theory, a covalent bond is formed between two atoms by the overlap of half-filled atomic orbitals of each atom containing one unpaired electrons. Atomic orbitals में overlap होना चाहिए, लेकिन which atomic orbitals can be overlap? Those atomic orbitals overlap which have unpaired electrons. Remember it, unpaired electron होना चाहिए, and that type of atomic orbitals overlap. Without unpaired electrons, that atomic orbitals do not overlap. See out here, this is the two atoms. They approach, and within the atom this nucleus and electrons are there. So nucleus positive charge, it is negative charge electrons, so they are approaching towards yourselves. In case of approaching, what happens? Two types of forces acting out there, repulsive force and attractive force. What is the repulsive force? This positive repulsive force, this to this is repulsive force, this to this repulsive force. Electron from between electron, if they approach, come towards, so negative repulse. This is the repulsive force, this is the repulsive force, this is the repulsive force. What is the attractive force? This positive and negative will be the attractive force from this nucleus to this electron, from this nucleus to this electron, it will be the attractive force. This will be the attractive force. This is the attractive force, and this is the repulsive force. This happens, but they approach each other. Until they approach, how they overlap? They approach together, and certain moment they mixed, they just touch, and then overlap starts. And overlap starts in the atomic overlap only possible when they have unpaired electrons. Okay? So how? See out here. Here attractive force and repulsive force acts, but overall attractive force is greater than the repulsive force. Repulsive force, attractive force. The attractive force is greater than the repulsive force. So it comes near to each other, and at a point each, and becomes, that is energy become minimum. So unformed stable bond. And this atomic orbital enter each other in each other part, that is partially penetrate, which is known as overlapping. What happens? They comes together, then they approaches, energy become minimum, they approaches, and finally they overlap. As they overlap, in this they are overlap, and the covalent bond is formed, and it is more stable. It is too stable. This is not stable, less stable. It is more stable. In this case, bond length is key. Accordingly, gradually decrease. Bond length is decreasing. So force of attraction is increasing, and this is stable atomic covalent bond. Okay. Next, see out here. Very important thing. This is the main concept of BBT. Nothing else. The atomic orbitals is overlapping, and atomic orbitals must be unpaired electrons is there. Clear? So depending upon the overlap may be positive overlap, maybe negative overlap, maybe zero overlap. We have learned about the s orbital, p orbital, d orbital. You have learned in the yesterday classes so many orbitals. Shape of the orbitals, you know, shape of the orbitals, spherical shape, dumbbell shape. You have learned dumbbell shape, spherical shape. That is the two lobe positive part, and this is the positive part.
This is also positive part. This is two positive part. This is plus plus. If this overlap is known as positive overlap, okay, then in phase. If this is one positive, one negative, out phase, negative overlap is there, okay. And zero overlap means there is in case of this and in case of this SP, there is zero overlap, okay. No overlapping is taken place in this case. So based on the type of overlapping, what I see, based on the type of overlapping, ओवरलैप कैसे होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है ओवरलैपिंग के लिए विब्रेटरी ऑर्बिटल के लिए, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ मेनली टू टाइप्स. What is that? That is sigma bond and pi bond. What is sigma bond and what is pi bond? Sigma bond and pi bond. Sigma bond, pi bond. So how sigma bond form and how pi bond form? ओवरलैपिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? हम बोला ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पर है, तो ओवरलैप होता है. ओवरलैप बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग इट इज टू टाइप्स, पाई बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड. टू टाइप्स, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड. दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड जो है, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, एस फॉर सिंगल. रिमाइंड इट. सिग्मा बॉन्ड के लिए सिग्मा बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड में होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा. एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, एस फॉर सिंगल. दैट मीन्स इफ द ओवरलैपिंग टेक प्लेस, दैट इज आमना सामने. आमना सामने मीन्स व्हाट? हेड टू हेड, हेड ऑन ओवरलैप. हेड ऑन, जब दोनों जो सपोज एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ओके, ए भी एस ऑर्बिटल है, ए हेड ऑन ओवरलैप एंड दिस इज द ओवरलैपिंग, दिस ऑर्बिटल ओवरलैप and this is not required now. This is s orbital, okay, and this is p orbital, s orbital and p orbital. This is overlap, this is overlap. So this on sidewise, not face to face. जब ओवरलैपिंग आमना सामना होता है, दैट इज फेस टू फेस. यू आर स्पीकिंग टू मी फेस टू फेस, दैट व्हाट आई एम स्पीकिंग टू यू फेस टू स्पीकिंग. दैट इज, मेरा बात में बहुत ताकत है, बिकॉज आई डू नॉट स्पीक इन बैकवर्ड्स, इन साइडवर्ड्स. आई वांट टू स्पीक इन फ्रंट एंड यू ऑल्सो ब्रिंग टू फ्रंट. द फ्रंट में आमना सामने में जो होता है उसका दम अलग होता है. तो इसको this bond is known as sigma bond. So this bond is known as sigma bond face to face. That is the head on overlap is known as sigma bond, and it is more strong and stronger depends upon the extent of overlapping. Extent of overlapping ज़्यादा होगा तो इसको वो strong होगा, overlapping कम होगा वो strong नहीं होगा, थोड़ा कम strong होगा. This is the overlapping, and this overlapping होता है किससे? See out here. And in case of pi bond, overlap ये sidewise होता है, sidewise होता है. Head on PP, this is S P, this is S, this is S. तो S में होता है head on overlap. SP में होता है हेड ऑन ओवरलैप. पीपी में होता है, कैसे होता है? थोड़ा से होता है. एपी, ये भी होता है, ये है ओवरलैप. पीपी में होता है. तो एस से होता है, एस ऑर्बिटल में होता है. एस पी से होता है, पीपी में होता है. दिस इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. जो बॉन्ड बनता है ऑन हेड ऑन ओवरलैपिंग,
दैट इज फेस टू फेस, आमना सामना जो ओवरलैप होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड, वो स्ट्रांग होता है। फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन दिस केस, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है, वो कॉलेज में है, कॉलेज में तो होता है रोटेशन, रोटेशन फ्री होता है। कैसे रोटेशन होता है? देखिए रोटेशन जो होता है ऐसे, ये तो एस है, ओवरलैप है, ए बी ओ एस ओवरलैप है, ये दोनों एस है, ये बॉन्ड होता है एस ऑर्बिटल के लिए, इसमें ये इसका रोटेशन दिस बराबर होता है, इसमें फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड व्हाट वी सी देयर इज नॉट फेस टू फेस, दिस इज साइडवाइज ओवरलैप, दैट इज अगल बगल में ओवरलैप होता है, फ्रंट में नहीं है, पीछे में, साइड में। जो कवर्ड्स है, जो भीरू है, जिसका वीक है, जिसका स्ट्रांग नहीं है, जो स्ट्रांग है नहीं, वो कहाँ से बात करता है? पीछे से। कहाँ से पिटाता है? पीछे से, साइड से। और जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो सामने से हिट करता है, सामने से पूछता है, सामने से बातचीत करता है। दैट मीन्स ये साइड वाइज ओवरलैप होता है। द साइड वाइज ओवरलैप मीन्स पाई बॉन्ड, दैट मीन्स इट इज वीक बॉन्ड, it is weak bond and it cannot rotate. Free rotation is not possible. How is possible? ये साइडवाइज एसएस भी नहीं होगा, एसपी भी नहीं होगा, ओनली पीपी में। सो दिस इज पी एंड दिस इज ऑल्सो पी। ये साइडवाइज ओवरलैप होता है, साइडवाइज, ओके, दैट इज पी में साइडवाइज ओवरलैप होता है। This is the extent of overlap. This is the extent of overlap. Here, overlapping out there and bond form out there. इसमें bond form होता है, covalent bond. So this is the pi bond. This is sigma bond. This is weak. This is strong. SS में होता है, SP में होता है, PP होता है, इसमें only PP में होता है। pi bond जो होता है, तो pi bond होता जो है वो PP में। क्लियर? इट कैनॉट रोटेट। जो डबल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड, जो कंपाउंड्स, ऑल सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आर फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, ऑल डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड जो कंपाउंड होता है, मैंने एल्काइंस, एल्कीन्स, ऑल एल्केन्स आर देयर। एसिटिलिन में, इथिलिन में होता है C2H4, C2H4 में जो बॉन्ड फॉर्म होता है C2H4, इसमें है पाई बॉन्ड है। ओके, एक्चुअली बॉन्ड विल ब्रेक इफ इट रोटेट, बॉन्ड विल ब्रेक। इसमें जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इफ यू रोटेट इन दिस वे, सो इट विल ब्रेक, बट इट विल नॉट ब्रेक। सो दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड बेस्ड ऑन द ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। कोवेलेंट बॉन्ड is of two types, one is sigma bond, other is pi bond. It is very important questions which is greater and differentiates and extent of overlapping. Okay, so next, so we have seen about the pi bond and sigma bond and how they are formed, and covalent bonds are two types, pi bonds and sigma bonds. So let's a little bit explain what you see out here. In case of single bond, two unpaired electrons, what you see in case of single bond जो होता है, in that case single bond means जो ऑर्बिटल का अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो टू ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कंबाइन ओवरलैप हो रहा है, दैट मीन्स टू अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल्स होता है। दैट मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप होता है उसके सिंगल बॉन्ड के लिए, एंड उसका वैलेंसी क्या होगा? 1। एंड इन केस ऑफ डबल बॉन्ड में क्या होगा? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप होता है, उसमें 2, इसमें 2, तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ओके, 6 ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड में होगा 6 अनपेयर्ड ऑर्बिटल का ओवरलैप। ओके, outer we see out here.
In case of इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स में हम क्या देखा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इट इज वैलेंसी. What in the VVT, in case of VVT, what we learn, the number of unpaired orbitals there, तो is this valency. Number of कितना number of unpaired orbitals overlap कर रहा है, there is this valency. But see at example hydrogen, what you see in hydrogen, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है. क्लियर? दैट मीन्स इसका 1s में 1s, इसका 1s, it has only 1 electron, it has only 1 electron, अनपेड इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल का अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो दोनों ऑर्बिटल क्या होगा, ओवरलैप होगा. तो s का मतलब स्फेरिकल, तो इसका जो s है स्फेरिकल, इसका भी s ओवरलैप हो गया. ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये जो है ये है ऑर्बिटल ओवरलैप. तो जो ये जो बॉन्ड बनता है एस बीच में, ये एस है, ये एस है. तो एस में जो ऑर्बिटल का ओवरलैप का बाद द ऑर्बिटल द बॉन्ड फॉर्म, इट इज सिग्मा और पाई बॉन्ड. आई हैव टोल्ड यू अ फ्यू मिनट्स अगो, द एस ऑर्बिटल ओवरलैप होने से क्या होगा, आमना सामना, दैट इज साइड वाइज, हेड टू हेड, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड. So this is the sigma bond. This is sigma bond. This is strong bond. Let's इसका unpaired, one is unpaired, इसका one is unpaired. This unpaired orbital gets overlapped and form covalent sigma bond. Clear? Let's another example. Oxygen. Oxygen का कितना? Suppose ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 2 6, that means 1s2 2s2 2p4. लास्ट सेल में कितना है 6, इसका 1s2 2s2 2p4. क्लियर? दैट मीन्स 1s 2s fulfill pair electrons, 1s 2s pair electrons. So this s orbital do not take place in overlapping, they do not form any bond. So only p orbital is unpaired there. I am only drawing the p orbitals 1 2 3 px py pz है. इसमें क्या है, ये दोनों होगा 2 px में 2 py 1 pz 1. इसमें भी होगा ये px py एंड pz. px में दोनों है, ए है, ए है. क्लियर? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, व्हाट इज सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हम क्या देखा, डबल बॉन्ड between oxygen, double bonds we see. So how it occurs, how it forms? See out here in p orbital there are 2 unpaired electrons are there, py and pz. py and pz में 2 unpaired electrons है. So these 2 unpaired electrons will take overlap, overlap will be taking place in these 2 unpaired electrons. Yeah. So first see, बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर, ये जो p ऑर्बिटल है, जो p में ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है, अभी x में हो नहीं होगा, 1s में नहीं होगा, 2s में नहीं होगा, बिकॉज दे आर पेयर्ड अप. आई हैव नॉट डन आउट हेयर, दिस 2s इज पेयर्ड अप, 2s इज पेयर्ड अप, दिस 2s इज पेयर्ड अप. So this is not involved in overlapping. So what is happened out there? वो px py pz, हम that is reverse order, px py pz. See out here, ये जो orbitals of p orbital है, this is p orbital. तो this z and z a face to face. So this pz and pz will overlap. तो this will overlap this. इसका साथ इसका होगा. That means a p orbital है, a भी p orbital है. Yeah, overlap will take place out here. So in this case,
pp orbital overlap is taking place, but there is still one unpaired orbitals are there, py and py. So सामने सामने हो गया, फ्रंट टू फ्रंट हो गया. सो ए तो फ्रंट में नहीं होगा, तो ए क्या होगा, ये साइड वाइज होगा. तो साइड वाइज का मतलब क्या होगा, ये फ्रंट फ्रंट में ये क्या होगा, एफ क्या बॉन्ड है, ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया. दैट इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है फेस टू फेस. एंड जो अलग पी वाई एंड पी वाई है वो क्या होगा, दैट विल बी साइड वाइज ओवरलैप होगा. एंड इन फ्रॉम दिस एंड दिस, इन दिस केस दिस एंड दिस, ये जो बॉन्ड बनता है ओवरलैप होगा, इसमें होगा सिग्मा बॉन्ड, क्या पाई बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड. सो इन दिस केस वन इज पाई बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड. क्लियर. तो ऑक्सीजन में दोनों बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है. कैसे बनता है, यू हैव सीन आउट हियर. फ्रंट में आ जाएगा, फ्रंट हो गया, तो ये तो फ्रंट में नहीं है, बीच में वो ऑब्स्ट्रक्शन है. सो इट विल ओवरलैप इन साइड वाइज. सो दिस इज द कंसेप्ट. ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में होगा, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो जब भी पाई बॉन्ड होगा उसमें पास सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा उसमें पास पाई बॉन्ड होगा. पाई बॉन्ड होने से सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, बस सिग्मा बॉन्ड होने से पाई बॉन्ड आएगा. सिग्मा बॉन्ड इज इंडिपेंडेंट, it is dependent, it is directional, it is non-directional. And you must remember, in the pi bond, in case of pi bond, the electron take place in case of orbital overlapping, that is known as pi electron. And in case of sigma bond, it is called sigma electron. And pi electron and sigma electron, pi electron is very weak, it is loosely bound, it is weak bonds, it can easily breakable, it cannot easily breakable. So it is active, it is non-active, it is strong. So it can easily be broken, pi electron. It is slide over each other. And these type of questions, on the basis of this concept, pi electron and sigma electrons, so many questions will come. So remind it. Clear? So now here I draw my ends out here. So, and we also see the valency in respect of VVT theory. We can now find out the valency of the atom, that is number of orbitals, number of unpaired orbitals depends upon, it indicates the valency of the electrons, valency of the atom. So here I draw my ends, and next video we will see the sum of the demerits, some of the critical condition that cannot be explained with VVT, and that will be described, that will be clearly been explained with the new topic, that is hybridizations. It will be next topic. So goodbye, thank you.